Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. मुझे visible है screen? दिख रही है. यहाँ से start करना है जी. अच्छा. But according to scientists, we cannot actually observe this last chain. किस last chain की बात हो रही है? Yes. Body का change होती है उसकी क्या? जी इसमें Body change की बात हो रही है. हाँ जी जी. Changing of body. Yes जी. Okay. Next. Okay, next. नवीन प्रभु जी अभी आप करेंगे कंटिन्यू अगर you need some time. Okay. Next पढ़ सकते हैं. Yeah, His Grace Dashafta Prabhu. Yes, really. Their eyes are so imperfect that they cannot observe many things. Their ignorance does not make the Bhagavad Gita unscientific. Why don't the scientists admit the imperfection of the senses? They must first admit the imperfection of the senses. Their seeing power does not determine what is and what is not sense. Dogs cannot understand the laws of nature. Does that mean the laws of nature don't exist? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी शायद आपकी. आप ठीक कर लीजिएगा माइक. Okay, प्रभु जी अभी ठीक आ रही है. अभी ठीक है. Yeah, next. Yes, issue Prabhu. Well, the scientists admit that argument, but they say the way to become perfect is through objective information and experience. Swati Mataji. No, that is not the way to become perfect. No one can become perfect through imperfect thinking. And our thinking must be imperfect because our senses and minds are imperfect. Srila Prabhupada. ये समझे क्या ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कोई क्वेश्चन कर सकता है ना आपको. आप अगर किसी को बोलोगे our thinking must be imperfect because our senses and minds are imperfect. थिंकिंग अलग बात हो गई और सेंसेस और माइंड अलग बात हो गई. तो इनका लिंक कैसा है कि सेंस और माइंड इम्परफेक्ट होंगे तो थिंकिंग भी इम्परफेक्ट हो जाएगी. यस प्रभु जी. कैसे उसको कनेक्ट करो ना प्रभु जी. जो परसीव करेंगे वैसा ही थिंकिंग डेवलप होता है और जब हम वेरी गुड जब हम परसीव कर रहे हैं बिकॉज वो इम्परफेक्ट है तो थिंकिंग किससे डेवलप होती है. थिंकिंग तो टच से डेवलप होती है. परसीव कैसे डेवलप होगी ना देखने सुनने इन सब से डेवलप होती है. तो इसलिए थिंकिंग जो है वो भी इम्परफेक्ट है. वेरी गुड. यस प्रभु. Srila Prabhupada, another question can be raised. Is it not possible that the soul may accept 3, 4 or 5 bodies and then die? Your turn. Yes, Prabhuji. You are accepting millions of bodies. I say that your body of yesterday is not your body of today. So if you live for 100 years, how many times have you changed bodies? Just calculate. 13. Why 13? Medical science says that all the bodily cells are replaced every 7 years. No, not every 7 years. Every second. Every second the blood corpus क्या पढ़ेंगे प्रभु? Corpuscles are changing. Is it not so? Yes. His gives the stuff the Yes, sorry. And as soon as the blood corpuscles change, you change your body. In scientific terminology, can the eternality of the soul be compared to conservation of energy? वो एक्चुअली वो डॉक्टर है ना मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति है तो इसलिए नई टर्म्स निकाल के करेंगे. There is no question of the conservation of energy because energy is always existing. But according to scientific terminology, the law of conservation of energy is that energy cannot be created or destroyed, which means I think that it is eternal. Oh yes, that we admit. Krishna is eternal, therefore all his energies are eternal.
Is that why the living entity is also eternal? Yes, if the sun is eternal, its energy, heat, and light are also eternal. Does it follow from this then that life cannot be created or destroyed? Yes, life is eternal. It is not created or destroyed. It is only temporarily covered. I am eternal, but last night I was covered by sleep. So I think in terms of yesterday and today, this is the condition of material world. Everything is spiritual. Is material consciousness the absence of Krishna consciousness? Yes. And when there is Krishna consciousness, where is material nature? If you continue in Krishna consciousness, you will see that nothing is material. When you offer a flower to Krishna, it is not material. Krishna will not accept anything material. And this doesn't mean that the flower is material on the bush and then it becomes spiritual when you offer it to Krishna. No, the flower is material only as long as you think that is made for your enjoyment. But as soon as you see that it is for Krishna's enjoyment, you see it as it really is spiritual. So the Wow. entire so the entire world Yes. is actually so the entire world is actually spiritual. Yes. Therefore, we want to engage everything in Krishna's service. That is a spiritual word. Can we also appreciate Krishna's creation in that light? For example, can we think this tree is very beautiful because it is Krishna property? Yes, that is Krishna consciousness. If someone looks at the deity of Krishna in the temple and thinks that it is only stone or wood, what does that mean? He is ignorant of the facts. How can the deity be material? Stone is also Krishna's energy. Just as electric energy is everywhere, but only the electricians know how to utilize it. So Krishna is everywhere, even in stone. But only his devotees know how to utilize stone to appreciate Krishna. The devotees know that stone cannot exist outside of the Krishna. Therefore, when the devotees see the deity, they say, Hare, here is Krishna. They see the real oneness of Krishna and his energy. Is it true that Krishna conscious persons perceive Krishna in a plain stone as much as in the deity carved from stone? Yes. Just as much. Yes, why not? In the Bhagavad Gita 9.4, Krishna says, Maya tatam idam sarvam jagad avyakta murtina mat sthani sarva bhutani na chahem tese avasthita. This means that Krishna's energy, that is, Krishna in his partially manifested form, pervades every atom of the universe, but his fully manifested personal form is present in the deity shaped according to his directions. This is the philosophy of Achintya Bheda Bhed Tattva, the simultaneous oneness and difference of God and his energies. For example, when the sunshine is in your room, that doesn't mean the sun itself is in your room. The sun and its separated energies, like heat and light, are one in quality but different in quantity. But still, you say that one can see Krishna in ordinary stone. Yes, why not? We see the stone as Krishna's energy. But can we worship him within the stone? We can worship him through his energy in the stone, but we cannot worship the stone as Krishna. ये point समझ गए क्या ये वाला? We can worship him through his energy in the stone, but we cannot worship the stone as Krishna. जैसे वो अपने गाजियाबाद में लाल कुएं पे वो कुत्तों का मंदिर है ना, कुत्तों की पूजा करते हैं वहाँ पे। छिपियाने में, yes. हैं? छिपियाने में? Yes, वो लाल कुआं के पास ही है क्या? हाँ जी, हाँ जी. वो कुत्तों की पूजा करते हैं वहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल. कुत्ते ही बनेंगे अगले जन्म में फिर। वो ऐसे ही करते हैं। Actually, they are worshipping dogs directly without the understanding that अगर कोई मतलब कुत्तों को क्या बैल को भी किसी को भी उसी एंगल से पूज रहा है कि भाई इनमें भगवान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग ठीक है। बट उसका अंडरस्टैंडिंग ही अगर खराब है तो क्या होगा उसका? अगर किसी की कॉन्शियसनेस ठीक है ना इस सेंस में, तो वो अगर अपोजिट सेक्स को भी देख रहा है अगर, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस ठीक है। बट अगर उसकी कॉन्शियसनेस खराब है तो अपोजिट सेक्स, सेम सेक्स, एनिमल किसी को भी देखेगा तो गलती है। करेक्ट ना? Yes, Guruji.
Okay, let's continue. तो जी ये वाली लाइन थोड़ी मतलब वैसी लग रही है, मतलब कंट्रोवर्शियल भी लग रही है मेरे को। वी कैन वर्शिप हाँ। हिम थ्रू हिज एनर्जी इन द स्टोन, मतलब जैसे मूर्ति पूजा के ऊपर बात करते हैं तो हाँ। ये तो कह रहे हैं कि मूर्ति के अंदर जो एनर्जी है उसे मतलब उसे वर्शिप करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया ना, तो ही हम्म एक्सपेंडेड हिज एनर्जी इन एवरी एटम। हम्म तो अगर आप ये मान रहे हो कि वो कितना सुंदर पत्थर है, और एक्चुअली इसका रीजन यही है क्योंकि भगवान की खुद की एनर्जी इसी में है, हम्म तब तो कोई दिक्कत नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप भगवान को ही देख रहे हो ना उसमें भी, हम्म है ना। कॉन्शियसनेस का फर्क है, और आप पत्थर ओके, को ऐसे देख रहे हो कि अरे कितना सुंदर पत्थर है, मैं इसे पूजा करूं, ये तो अच्छा, एकदम ही गलत हो गया। तब तो हाँ आप ये मान रहे हो कि पत्थर में कुछ बात है, पत्थर में कोई बात हाँ नहीं है, भगवान में बात है, हाँ। इसलिए पत्थर में बात है, तब वो अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ये वैसे मतलब बहुत बड़ा पॉइंट लगा गुरु जी मेरे को, कि मतलब हम लोग क्लियर कर या सकते हैं ये तो। या इसीलिए लोग जैसे डेमीगॉड वर्शिप कर रहे हैं, मान लीजिए हम्म डेमीगॉड वर्शिप भी कर रहे हैं, तो हम्म भगवान बोले हैं ना भगवत गीता में कि जो डेमीगॉड वर्शिपर है दे आर लेस इंटेलिजेंट, हम्म because they don't know the benefits they are getting from demigods are actually awarded by me, हम्म है ना। हम्म ठीक बोल रहा हूँ ना ईशु प्रभु? जी प्रभु। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। यस We cannot worship this bench as Krishna, but we can worship everything because we see everything as Krishna's energy. This tree is worshipable because both Krishna and his energy are worshipable. Worshipable. वर्शिपेबल। Worshipable. But this does not mean we worship the tree in the same way as we worship the deity of Krishna in the temple. क्यों, क्या Yeah. फर्क है जी दोनों में? अब बताओ क्या फर्क है दोनों में, यहाँ पॉइंट आया ना वो वाला, that this does not mean we worship the tree in the same way as we worship the deity of Krishna in the temple. तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ट्री में, ट्री इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा, सो ओके आई लव द ट्री, बट देन deity in the temple, deity in the temple is Krishna himself, correct na? So deity in the temple is Krishna himself, so we don't worship the tree as we worship Krishna. इसलिए हम प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि worshipping the deity of Krishna in the temple is completely different because there is Krishna himself. Yes, Bhaji. यस स्वाति माता जी। In my childhood, I was taught by my parents never to waste Krishna's energy. They taught me that if even a small grain of rice was stuck between the floorboards, I should pick it up, touch it to my forehead, and eat it to save it from being wasted. I was taught how to see everything in relation to Krishna, that is Krishna consciousness. We therefore do not like to see anything wasted or misused. We are teaching our disciples how to use everything for Krishna and how to understand that everything is Krishna. As Krishna says in the Bhagavad Gita 6.30, Yomam pasyati sarvatra sarvam cha mai pasyati tasyaham na pranasyami na cha me na pranashyati. For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Yeah, वही एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है। Okay, so moving to the next morning walk, 11th morning walk. Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Singh and other students, detecting the spirit soul. Scientists find it very hard to see the spirit soul. They say its existence is very doubtful. How can they see it? It is so small to see. Who has that seeing power? Still, they want to sense it by some means. If you inject someone with just 1/100th of a grain of very venomous poison, he dies immediately. No one can see the poison nor how it acts, but it is acting nevertheless. So why doesn't the scientist see the soul by its action? In such cases, we have to see by the effect. The Veda says that because of the minute particle called the soul, the whole body is working very nicely. If I pinch myself, I immediately feel it because I'm conscious throughout the whole of my skin. But as soon as the soul is out of my body, which is the case when my body dies,
You can take the same skin and cut and chop it, and nobody will protest. Why is this simple thing so hard to understand? Is this not detecting spirit? We may तो detect जैसे the soul क्रिश्चियन in होते this हैं ना, way. क्रिश्चियन को इस पॉइंट पर डिफीट किया था। क्रिश्चियन बोलते हैं ना कि एनिमल्स में सोल नहीं होता और ह्यूमन बींग्स में होता है। तो हमें ऐसे ही उनको डिफीट करना है। ये बात ध्यान रखिए, मतलब कॉन्शियसनेस से कि भाई देखिए अगर सुई चुपाएंगे तो एनिमल भी उछलेगा और हम भी लोग भी उछलेंगे। इसी का मतलब है कि हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस है दोनों के अंदर, और इसी का कॉन्शियसनेस द सिम्पटम ऑफ द सोल। द सोल इज देयर इन एवरी लिविंग एंटिटी। ठीक है ना? Yes, Guruji. Yeah. We may detect the soul in this way, but what about God? First of all, let us understand the soul. The soul is a sample God. If you can understand the sample, then you can understand the whole. Scientists are in the process of trying to create life. Process of trying to, that we kick out, that we do not accept. A beggar is saying, I'm trying to be a millionaire. We say, when you become a millionaire, then talk. Now you are a pure poor beggar. That is all. The scientists say that they're trying, but suppose I ask you, what are you? Will you say, I'm trying to be? What are you now? That is the question. We are trying is not a proper answer. What to speak of a scientific position? Well, although they haven't been able to create life so far, they say that soon they should be able to do so. Any rascal may say that. If you say, in the future I shall be able to do something extraordinary, why should I trust or believe you? Well, the scientists say they have done so much in the past and they will accomplish more in future. In the past, there was death and people are dying now. So what have the scientists done? Help them, help them. Scientists have helped to minimize the duration of life. 100 years, now they seldom life more than 60 or 70 years. And the scientists have discovered atomic energy. Now they can kill. So they have helped only in dying. They have not helped in living, and still they dare to declare that they will create. But now we have airplanes and The scientists cannot stop death, they cannot stop birth, they cannot stop disease, and they cannot stop old age. So what have they done? Formerly, people used to become old, and nowadays they are becoming old. Formerly, people used to become diseased, and now they are become diseased. Now there is more medicine and more disease. So what they have accomplished? Scientists have not helped improve the order of the world. We are going to challenge all the rascal scientists who say that life has grown out of matter. The fact is that matter has grown from life. How long can scientists cheat people? 100 years, 200 years? They cannot cheat them for all the time. Cheating has been going on since time immemorial, so perhaps they think they can continue forever. Not since time immemorial. Science has been cheating people for only the past 200 or 300 years, not before that. oh, really? Yes, for the last 200 years, they have been preaching that life comes from matter, not for thousands of years. And the cheating will be finished in another 50 years. Yes, now there is so-called anti-intellectual movement. People are rebelling against science and modern progress. ये तो है. And what is that science? It is not science, it is ignorance. Ignorance is passing for science, and a religion is passing for religion. But this cheating cannot go on for long because some people are becoming intelligent. Yeah. In Newsweek, one of the largest magazines in the United States, there was an article about the degradation of Christianity. The article included a cartoon picturing the devil causing earthquakes. There was recently a very large earthquake in South America that killed many thousands of people. The cartoon attributed such things to the devil, and then right next to him, it is showed
Richard Nixon, presenting himself as a follower निक्सन of पता है ना Christ. कौन है? रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका के जी, प्रेसिडेंट। president. जी. जी जी। Right next to him, it is showed Richard Nixon presenting himself as a follower of Christ, but bombing Southeast Asia. In this cartoon, the devil turned to Richard Nixon and says, "It's hell keeping up with the Christians." Yes, people will criticize in that way. People are becoming advanced. How long can they be cheated by so-called science and so-called religion? If Mr. Nixon loves his countrymen, why does he not love his country's cows? They are also born in the same land and they have the same right to live. Why are they killed? Those shall not kill, but the animals are being killed. That is imperfection. Krishna embraces both the cows and Radharani. That is perfection. Krishna even talks with the birds. One day on the bank of Yamuna River, he was talking with a bird because he speaks even in the languages of the birds. An old lady saw this and was struck with wonder. Oh, he's talking with a bird. You mean he was actually talking the way the birds talk? Yes, one of the Krishna's qualities described in the Vedas is that he can speak any language. He is the father of all living beings and the father can understand the language of his children. Krishna is supreme enjoyer. Actually, except for those who are Krishna conscious, no one can have any real knowledge, nor can anyone enjoy. One simply suffers, but he thinks the suffering is enjoyment. This is called Maya or illusion. In America, people work hard day and night and they think I am enjoying. This is Maya. A conditioned soul cannot enjoy anything. He simply suffers, but he thinks he is enjoying. Therefore, in Srimad Bhagavatam, the conditioned soul is likened to the camel. The camel is very fond of eating thorny twigs that cut his tongue. While he is eating them, blood issues from his tongue and mixes with the thorny twigs. They become a little tasty. And he is thinking, oh, these twigs are very nice. That is called Maya. Maya means that which is not. Ma means not, Ya means this. So Maya means not this. That is the explanation of Maya or religion. Scientists are in Maya because they think they are improving things and becoming happy. But this world, along with everything in it, will eventually be finished because it is Maya. It is not what we think it is. As Srimad Bhagavatam explains, the materialists are thinking they are becoming victorious, but they are actually being defeated. Can we stop here now, Prabhuji? Yeah. 7:28. Yeah. We can start with the learnings or realizations or some. I loved the last line, bro. जिसमें प्रभुपाद ने camel का example दिया. Sorry, Prabhuji. जिसमें camel खाता रहता है और उसी को फिर बोलता है, उसके टंग से जो खून निकलता है उसी का टेस्ट लेके बोलता है I am victorious. I enjoyed it very nice. इसी तरह हम लोग देखते हैं ना कि मटेरियल लेवल पे जो हमें अचीवमेंट मिलता है हम उसी में खुश हो जाते हैं कि oh I got this. We don't know the suffering we went through just to achieve that minor, very minute pleasure of very small duration. खूब हार्ड वर्क करते हैं, हल्का सा प्लेजर मिलता है, खुश हो जाते हैं. मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे को नया घर मिल गया, मेरे को नई गाड़ी मिल गई. We don't see the sufferings we have gone through to have that pleasure of very small duration. We don't understand that. Like camel, खा रहा है, हल्का सा खून भी निकल रहा है साथ में, उसी में एंजॉय कर रहा है. So I like that one. Thank you. Prabhuji, इसमें कोई ये भी कह सकता है कि yes, sorry, yes, Prabhuji, please. No, please. मैं प्रभुजी कह रहा था कि कोई कह सकता है कि तो फिर भक्ति में भी तो सफरिंग है, कि ऐसा तो है नहीं भक्ति में सफरिंग नहीं. एक्चुअली क्या था ना, ये सेम क्वेश्चन पूछा था परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी से डिसाइबल ने. वो महाराज कह रहे थे कि वेयर इज द सफरिंग, वेयर इज द सफरिंग. महाराज पूछ रहे थे. तो एक डिवोटी ने कहा कि गोपीज आर सफरिंग फॉर कृष्ण, क्राइंग फॉर कृष्णा, दैट इज सफरिंग. तो महाराज बोले कि oh that is the highest level of pleasure baba. The problem is that we don't understand that pleasure. We have not experienced that pleasure actually. That is why we are saying so. जैसे आप वीडियो पे काम कर रहे हैं, आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, आपको अगर मजा नहीं आता तो आप क्या इतनी मेहनत कर रहे होते उसमें? नहीं. That is also suffering ना, but why are you working so hard? Because that is also another kind of pleasure.
to work for Mhm. Krishna. है ना? Okay, you are saying that suffering is converted into pleasure if you are working for Krishna. That is pleasure only, That is but pleasure only. bodily we feel that it is suffering, Okay. but soul knows that okay, this is pleasure. Oh. इसलिए बाहर से देखने वाले आदमी को लगता है कि ये लोग क्या कीर्तन करते जा रहे हैं, धूप में देखो रथ यात्रा निकल रही है, पसीने बह रहे हैं इनके, बट वी नो द प्लेजर दैट वी आर हैविंग, है ना? और स्टार्टिंग स्टेजेस में ना वो थोड़ा लगता भी है, जैसे भगवान बताएं कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे स्टार्टिंग में वो पॉइजन लगता है और नेक्टर बाद में मिलेगा। इसी तरह स्टार्टिंग स्टेजेस में पुश करना पड़ता है अपने को, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, माला करना सब ये बहुत ऑस्टेरिटी लगेगा, पॉइजन की तरह लगेगा कि अरे क्या घुमाते रहो इसको, करते रहो। और जब वही व्यक्ति जो 1-2 माला नहीं कर पा रहा था फिर 16 माला कर रहा है, फिर वो और भी सीमाएं पकड़ रहा है, कैसे हो रहा है ये? क्यों जी? वैसे ही है ना, स्टार्टिंग में उसने पॉइजन जो लगा उसे, उसने उसको टॉलरेट किया, अब उसे नेक्टर मिल रहा है, फिर और सीमाएं पकड़ेगा तो पॉइजन लगेगा बट बाद में फिर वो से नेक्टर लगने लगेगा, इस तरह से। यस प्रोजी, सो जैसे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज आल्सो माया, बट क्योंकि मतलब ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, मतलब तो लाइक एंड वी हर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग प्रोजी की माया देवी मतलब वो हमें माया में रखती है, मतलब वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से रिगार्डिंग हमने ऐसा मतलब इस हद तक फिर हम इस मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हैं। That's a good point bro। मतलब कंडीशन स्टेज वही है, मटेरियल वर्ल्ड में आके हमें लगे कि मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है, कंडीशन हो जाता है जीव। जैसे मान लीजिए सीए के बीच में आके लगे कि सीए ही सब कुछ है, इंजीनियर्स के बीच में आके लगेगा कि इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, आईटी इंजीनियर्स के बीच में आएगा तो लगेगा कि प्रमोशन ही सब कुछ है। इस टाइप से मतलब जिस एनवायरनमेंट में उसी के लिए लगने लगा कि हाँ यही सब कुछ है, मतलब मेरा लाइफ सब इसी के लिए है। इंस्टेड वी फॉरगेट आवर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो मटेरियल वर्ल्ड में आए तो ऐसे लगता है मटेरियल वर्ल्ड को कर लिया जाए, जैसे हिरण्यकश्यप को लगा, वो भी आया तो उसे लगा कि मैं पूरा मटेरियल वर्ल्ड कर लूं, तो उसने कर भी लिया था बेचारे ने, बट तृप्ति कहाँ है इसकी? That is also another example of how we cannot satisfy our thirst in this material world. Thank you। Yes, so जी माया सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड में है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड ही मतलब एक तरह से माया, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माया नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब दो माया काम करती है, एक माया तो भगवान को हेल्प करती है उनकी लीलाओं में, जैसे भगवान आते हैं ना संसार में, तो अगर उनको अपनी हमेशा रिमेम्बरेंस रहेगी कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो लविंग एक्सचेंजेस कैसे कर पाएंगे डिवोटीज के साथ। जैसे यशोदा मैया के साथ वो कैसे माँ उनको मारने भागेंगी, और तो वो कैसे डर कैसे पाएंगे, फिर वो मैया से डर के कैसे भागेंगे, समझ रहे हो? तो एक माया रहती है भगवान की सेवा, वो माया को बुला देती है, वो भगवान को बुला देती है कि वो सुप्रीम गॉड है, और फिर वो छोटे बच्चे की तरह उस लिविंग एक्सचेंज में आते हैं। और दूसरी माया होती है जो लिविंग एंटिटी पे काम करती है, तो वो माया क्या काम करती है, उस माया का काम क्या है, वो भी मम माया बोल रहे हैं भगवान, वो भी भगवान की ही माया है। जैसे भगवान बोलते हैं ना माम भक्ता, भगवान बोल रहे हैं भक्त भी मेरे हैं, माया को ही बोलते हैं माम माया। भगवान भी माया को अपना ही बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की सेवा कर रही है। तो अब कोई सोचे भाई कैसी क्या सेवा कर रही है? वो सेवा कर रही है कि लिविंग एंटिटी जो है उसको ये रियलाइज कराना दैट ही इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और जब तक वो इस बारे में पक्का नहीं कर लेती है माया अच्छे से कि ये जीव, पहले तो वो जीव लड़कता रहेगा लाइफ आफ्टर लाइफ, एक जन्म से दूसरे जन्म, एक जीव फिर एक जन्म में जाके कृष्ण कॉन्शियस पकड़ेगा, फिर उसका एग्जाम शुरू कर देगी वो। और जब उसे जिस दिन उसे रियलाइज हो जाएगा कि ये नाउ दिस जीव का जो काम है वो हो गया है संसार में, ही इज नाउ 100% सरेंडर टू कृष्णा, देन ही विल माया विल सपोर्ट दैट जीव गो बैक होम, बैक टू गॉड। तब तक एग्जाम चालू रहेगा। तो अभी हम सब अभी एग्जाम स्टेज में है, दो माया होती है प्रभु। ओके प्रभु जी, माया विल सपोर्ट आल्सो। हाँ, माया सपोर्ट करती है हमें, ऐसा नहीं है। माया को जब लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में तो बहुत एग्जाम होते हैं, और फिर जैसे जैसे भक्ति ज्यादा करता है तो एग्जाम बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि माया भी चाहती है कि जल्दी भगवान के पास चला जाए, मतलब 100% भगवान को सरेंडर कर दे, माया चाहती है ये। तो इसलिए जिसका एग्जाम ज्यादा हो रहा है ना लाइफ में, तो समझ जाओ उसकी भक्ति ठीक चल रही है, माया ज्यादा एग्जाम ले रही है, मतलब ठीक है, उसका जल्दी टेस्ट हो रहे हैं ना, उसके क्रैश कोर्स चल रहा है फिर उसका।
यस प्रभु जी, मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे जब प्रभुपाद जी की लाइफ में जब सब कुछ जा रहा था धीरे धीरे धीरे, उनकी कंपनी और सब कुछ जा रहा था, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हाँ भगवान चाहते हैं कि मैं भगवान की और सेवा करूँ। भागवतम में आया है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि आप तो हमारे साथ ही रहे, फिर ये क्या हमारे साथ होता रहा पूरे जीवन। आप साथ थे तो हमें तो एंजॉय करना चाहिए था। तो भगवान बोले कि यही तो मेरी अहेतु की कृपा है, जिन पे मेरी अहेतु की कृपा रहती है उनसे मैं सब छीन लेता हूँ धीरे धीरे। तो डरने का नहीं है, छिन भी जाएगा तो तभी छिनेगा जब माया देख लेगी कि नहीं ये छिनने के बाद रोना धड़ा नहीं करेगा। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू दशा जी। ओके एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनीथिंग? बस प्रभु जी, अगर मैं लेने के लिए तैयार हूँ सब कुछ जो लोग छोड़ने के लिए तैयार है। नवीन प्रभु जी संभाले हुए हैं हमें इतने टाइम से, उनके शरण में ही आए हम भी। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं बोलिए प्लीज। ओके ईशु प्रभु, आप नहीं शेयर कर रहे हैं आज? नहीं प्रभु, मैं तो वो वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट का वो देख के थोड़ा सा शॉक था मैं, प्रभुपाद के जो वो बता रहे थे। हाँ। बार बार सुनते हैं हम, लेकिन प्रभुपाद का जो स्ट्राइक किया सेंटेंस कि हम सिविलाइजेशन के नाम पे कर क्या रहे हैं। मतलब अभी तक हमने प्रोग्रेस किया साइंटिफिक प्रोग्रेस करके, मतलब वो हमें दोबारा सोचने पे मजबूर किया है कि मतलब थोड़ा सा माइंड, मतलब उसे देखेंगे अब, मतलब आसपास के सराउंडिंग्स को भी देखेंगे तो व्हाट एक्चुअली वी आर कल्टीवेटिंग, और जो सिविलाइजेशन का नाम हम देते हैं कि वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर कमिंग, मतलब कौन कौन सी जेन का नाम दे देते हैं कि जेन जी जनरेशन एंड दिस एंड दैट, बट एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि लाइफ की मतलब जो एक्सपेक्टेंसी थी वो 70 से 100, तो ये कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है। बट जो हम क्लेम करते हैं कि वी आर, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, वी आर मेकिंग द लाइफ सिंपलर एंड बेटर, तो वो एक्चुअली में क्वेश्चन पूछने लायक है कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वी आर इग्नोरिंग दोस क्वेश्चन, दैट इज द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बस प्रभुपाद वही बता रहे थे, बस यही था। थैंक यू ईशु प्रभु। ओके स्वाति माता जी। नहीं, जैसे ईशु प्रभु बोल रहे थे वही मेरे माइंड में भी वही था कि जैसे nowadays we talk about that मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मुझे लगता है फ्यूचर में वो सब इंटेलिजेंस सब आर्टिफिशियली होती रहेगी बस। तो ह्यूमन लेवल पे भी सब आर्टिफिशियली होता जा रहा है और वही रहेगा आगे भी। तो कुछ सारी चीजें वो डिमिनिश ही होती जा रही हैं जो एक्चुअली पहले होती थी, और वो धीरे धीरे एडवांस क्या हम डिग्रेड ही होते जा रहे हैं। सो दैट वाज Prabhupada also talking about. Yeah, absolutely. ओके उदित प्रभु। यस प्रभु जी, हाँ ये पॉइंट तो प्रभु, हाँ ये फैक्ट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम ही हुई है। पहले लोग जीते थे 100 साल 120 साल, और अभी भी हम देखेंगे कि अभी हम जैसे पहाड़ों में जाएंगे ना, कुछ पिछड़े हुए वर्ग इलाके हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ अभी भी लोग मतलब 100 साल 120 साल जी रहे हैं। अभी मैं एक हिल एरिया में गया था, वो ऊना के बैक एंड में था, तो वहां पे कनक मतलब मैं से ये डिस्कस कर रही थी कि यहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है, तो अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वहां पे एक मंदिर में गए थे, तो वो प्रीस्ट थे वहां पे। एक तो हमने उनसे बात करी थी, तो वो ये बात भी आई, तो हालांकि मैंने उनसे बोला था कि मैंने कहा यहाँ को बीमारी नहीं पड़ता, तो हॉस्पिटल की जरूरत ही क्या है। तो वही बात उन्होंने कंफर्म करी प्रीस्ट ने। तो वो कह रहे थे यहाँ पे तो 100 110 साल के भी लोग हैं और बहुत मिल जाएंगे, और कह रहे कि यहाँ बीमारी नाम का कुछ है ही नहीं। कह रहे छोटी मोटी, तो बिकॉज वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट है कि आज हम लोग सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? जो जो सिटीज में रह रहे हैं। सिटीज में क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे है। सिटी में रहने वाले सबकी सिटी बजी पड़ी है, आप देख लो सिटी कोई बजे भी पड़ी काम है प्रभु करता जी, हूँ प्रेशर कुकर बने पड़े हैं सब। कहते हैं बैक पेन वैक पेन रहता है सबको। बिल्कुल प्रभु जी। तो तो मतलब वो ये बिल्कुल क्लियर है, बट वो ये कि माया इल्यूजन, वो वहां पे पहाड़ पे ना डोमिनोज नहीं मिलता, और लोगों को चलना पड़ता है, तो वो उन्हें समझ तो मतलब बड़ी दिक्कत है भाई। दिक्कत है ब्रो जी। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बल्कि वो लोग ज्यादा पीसफुल जीते हैं। या यस ब्रो जी।
Okay, so let's stop now. Vancha kalpatarubhesha kripa sindhayuche patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Srila Prabhupada ki jai. Samved Gaur Jai. Mathas ki jai. Yeah. Hare Thank Krishna. you. Thank you everyone for joining. Thank you, Hare Krishna. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much.